My dearest children, welcome to Vedanta, your super cool, super fun, super amazing, and absolutely your personal NEET channel, which is there to help you crack NEET 2019. Yes, I'm Dr. Vani, and on behalf of Vedantu, I welcome you all to another super duper amazingly fun session that we're going to have today, loaded with information. So, in the next 1 hour, I will try and teach you from 80 slides. Yes, we will go slow yet quick at sometimes, and we will deliberate upon each and every point. This is the Vedantu app. So this is the app which is going to help you solve all your doubts really quick. Please download the app. Right, everybody, please download the app so that you are able to post the questions that you have. Okay. Okay, moving ahead, my dear kids. This is our timetable. We've already done genetics and evolution part 1, part 2, and part 3. And in today's amazing class, we're going to be doing genetics and evolution part 4. Yes? Okay. So today's class, my dearest kids, is on genetics and evolution part. Absolutely, part 4 that we're going to do right now. So without further delay, let me start with a super cool class. Correct? I'm going to do principles and inheritance part 2 in genetics and evolution part 4 in today's class. Okay, cool. So let's start. Okay, now this is one very important slide which I have right in the beginning. Yes, so many times, my dear children, every day morning you must be getting up feeling slightly confused. रात को नींद नहीं आती होगी, सुबह जब नींद खुलती होगी थोड़ी बहुत नींद आने के बाद तो टेंशन लगता होगा, डर लगता होगा, सोच रहे होगे क्या होगा क्या नहीं होगा. एक एक करके अप्रैल का एक एक दिन निकलता जा रहा है. 1 अप्रैल चला गया, 2, 3 और आज 4 अप्रैल हो गया है. बट डोंट वरी माय डियर किड्स, डोंट वरी. लक्ष्य को वाकई में हर हाल में पाना है और हम सब पूरी टीम आपके साथ जुड़कर खड़ी है. यस, सो डोंट वरी एट ऑल. सो मेनी ऑफ यू कंटिन्यूसली कीप मैसेजिंग अस कि मैम पीडीएफ नोट्स अपलोड करिए. सो आई होप वो आपको अभी तक मिलने लग गए होंगे. यू मस्ट हैव स्टार्टेड टू गेट द डेली प्रैक्टिस पेपर्स आल्सो फ्रॉम होम एंड वी आर मेकिंग अ डेली बोनस सीरीज. यस, बट यू हैव टू गिव अस सम टाइम. इसमें जो जो चीजें आपको मुश्किल लग रही हैं, जिन पे आप चाहते हैं कि हम लेक्चर बनाए, so many of you even personally message me on my email IDs. Yes, just drop me a message on Vedantu or just drop me a message on my personal email ID or drop me a message on YouTube. We will try and send you notes as soon as possible. I will try and make lectures as soon as possible. But don't give up on your goal. Don't do that. Your goal should always be right there in front of you. You do not have to give up on your goal. Yes, लक्ष्य को वाकई में हर हाल में पाना है. Do not give up on your goal. So many of you are telling me that, ma'am, please speak in Hindi. So many of you tell me, ma'am, please speak in English. So don't worry. I will try and speak in both the languages that helps all the students across our country. Yes. So don't give up on your dreams. Don't give up on your goals. Together, we will go out and achieve them. So with that, let's start today's topic, which is principles and inheritance. I mean, principles of inheritance and variation part 2. Right? Today we all have again 1 more hour in which we will try and absolute rock this topic. Yes, in this 1 hour, I will try and do the maximum possible questions with you. All the questions are previous years. राइट. सो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई डाउट मत रखिएगा. दैट इज व्हाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो मेनी ऑफ यू टेल यू, मैम थ्योरी. हर क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी स्लाइड अटैच्ड है. एवरी क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. Right, so that will be the theory. Apart from this, I've already made slides on YouTube on the Vedantu NEET channel. Right, on majority of the topics जो मैं करवा रही हूँ उन पे पहले ही हम theory discuss कर चुके हैं पिछले महीने. So please go and see that. Right, so चलिए, let's start. On your screen, get set go, on your mark. Correct? Yes, question number 1. Right, so theory to be discussed, as I was already mentioning, it is there in the NEET YouTube channel. So please see the NEET YouTube channel for the theory which is there. Yes, plant morphology हुआ है, उसकी theory वहां पर है. Molecular basis of genetics की detailed theory वहां पर है.
Correct? So please go and see the channel. You will find the theory there. Let's do this particular question now. On your screen, the question, my dear kids. There's a man whose father was colorblind, right? तो एक आदमी था, उसका father colorblind था. He marries a woman who had a colorblind mother. इसकी एक औरत से शादी हो जाती जिसका colorblind mother थी, but normal father. What percentage of male children of this couple will be colorblind? Come on, do it, everybody, quickly. Yes, exactly. So let's do this question. This I've already solved this question for you. So this is a man whose father was colorblind. You know colorblindness is a X-linked recessive disorder. It is X-linked, yes, recessive disorder. आपको पता है ये, करेक्ट? सो क्योंकि ये X linked है और क्योंकि ये recessive है, राइट? तो X linked है, अगर किसी के फादर को है, ये Y क्रोमोसोम से पास नहीं होती है. एंड marries a woman who had a colorblind mother. So this is a woman, इसकी मदर एक colorblind थी, हमने इसको ऐसे कर दिया. इनका क्रॉस कर दीजिए. This is the carrier female, this is the normal female, this is the sufferer male, and this is a normal male. Is that clear? So this is your sufferer male. Got the point? So how many, what percentage of the male? These are 100% of the male. What percentage of the male will be colorblind? Answer is 50%. Remember, colorblindness and hemophilia, my dear kids, is X-linked. That means it is transferred only from the X chromosome and it is recessive. Is that clear? It is not dominant. It is a recessive disorder. Moving ahead, next questions, right? This is another way. Like आप कह रहे थे इतनी क्लास में बच्चे कहते थे theory, this is another way, right? Father colorblind, mother not colorblind, not a carrier. So ये normal mother है, right? अगर कभी ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका फादर कलरब्लाइंड था तो एक yes X chromosome आएगा, right? And yes, see, and then you do this. No colorblind sons, all daughters 100% chance है colorblind carriers, right? अगर फादर कलर ब्लाइंड है, सी, तो ये ऐसे होगा. मदर नॉर्मल है तो ऐसा क्रॉस होगा. ओके, चलिए. A human female with Turner syndrome. Turner syndrome is, yes, exactly, it is XO, correct? Is that clear? So the females have an underdeveloped ovary, they have a webbed neck, they have short stature, they are infertile. Yes, they do not give birth to children sterile because they do not have two X chromosomes. Two X chromosomes are required for the normal development. But in Turner syndrome, we see that there is only one X chromosome and not two X chromosomes. So it has, you know, yes, exactly. It has 45 with XO. See, my dear kids, मैं कोशिश करूंगी कि जो क्वेश्चन वाली स्लाइड है मैं उसको टच ना करूं. Why? So that अगर आपको बाद में रिव्यू करके फटाफट से आगे खुद आंसर करना है, you should know the answer and you'll be able to revise it quickly. Right? Or you can even take snapshots of the questions so that you can go home and quickly revise. So human female, see, usually how many chromosomes? Yes, exactly. So XX होना चाहिए यहाँ पे, but XX नहीं है तो क्या हो गया है? XO. We have 23 pairs of chromosomes, everybody. Yes, we have 46 chromosomes, 23 pairs of chromosomes. Now that one is less, so how many become the total number of chromosomes? 45. Does it have one additional chromosome like XXX? No, this is also a syndrome. I'm coming to it. That is why I'm not discussing it. आगे question पे आएगा. Does it exhibit male characters? No, because it does not have Y chromosomes. Is it able to produce children with normal husband? No, it's not able to produce children because the ovaries are not functional. Remember this. Why are the ovaries not functional, bachcho? Is the speed of the lecture fine? Yes. Why are the ovaries not functional? Because there is only one X. Ovaries will be functional if there are two X chromosomes. Is that clear? Any doubts? Perfect. Chaliye, moving it. Please shoot your doubts down in the comment section. Right? So if there is a XO where the O is missing, that's known as Turner syndrome. Whenever you look at the chromosome, see this. Can you see? The other is not there.
Why? So anyways not है because female नहीं है. Can you see the other is missing? This diagram where you have the chromosomes arranged and you see the diagram, this is called as karyotype. Extra information, please write it down. Yes. So this diagram where all the chromosomes are arranged, where we are able to see the chromosomes in a map, is known as the karyotype. What does the karyotype help us in? The karyotype helps us to see if there is any chromosomal abnormality or not. That is the function of a karyotype. What is the function of a karyotype? To help us see just in case there is a chromosomal abnormality or not. Perfect. Chaliye, moving ahead. Next question on your screen. What are alleles? Alleles, basically, the definition of alleles says that alleles are alternate forms of a gene. What are they? They are alternate forms of a gene. एक gene का form हो सकता है capital T, right? That is for tallness. So an alternate form of the gene will be small t, which will bring about dwarfness. There could be a gene called I, which has got 3 alleles, right? I stands for isoagglutination. राइट. व्हाट इज आइसोएग्लूटिनेशन? जब भी दो ब्लड्स मैच नहीं करते, यू हैव अ ब्लड ग्रुप ए एंड यू हैव अनदर ब्लड ग्रुप बी. प्लीज पे अटेंशन, जो मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. So whenever you have blood group A and another blood group B, and these two blood groups are mixed with each other, this leads to a clumping reaction. What does this lead to? This leads to a clumping reaction. This clumping reaction is known as agglutination. So the blood group gene is known as I, or isoagglutination. It has got 3 forms. What are the 3 forms? There's a form called IA, there's another form called IB, and there's another form called IO. So there are 3 alleles. This is called as multiple allelism because usually alleles are just an alternate form. सिर्फ एक alternate form usually alleles का होता है. So what could be the answer out of this? Is it capital T small t which is allele? Is it a heterozygote? Is it the appearance which is allele? Is it true breeding? No, it is an alternate form. So it's a different molecular form of a gene. One can be capital T, another can be small t. One can be capital Y, another can be small y. Capital R, yes. So alternate forms of a gene are known as alleles. Are you all following? This is very important. Alleles पे बहुत questions आते हैं. Alleles are mentioned in detail in your NCERT. You must read that. Moving ahead, next question on your screen. Yes, or little explanation, like I always say, little explanation, right? So देखिए, capital A and small a, right? This is a chromosome, correct? The small arm is called the P arm of the chromosome. The long arm is called the Q arm of the chromosome. This place where the genes are located, this place where the genes are located is called the locus of the gene. What is it called? It's called the locus of the gene. The locus has a allele. Is that clear? What does the locus have? The locus has a allele. Right? Alleles are alternate forms. So alternating forms of a single gene. This statement I have picked up from NCERT. It is extremely important. Next time around यही exam में question बनकर आ सकता है. चलिए next. Yes, multiple alleles. मैंने अभी आपको बताया. Yes. कहाँ होंगे मल्टीपल एलील्स? बताइए. देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देखो बच्चों, एक आदमी के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? सिर्फ 2, राइट? सो एक के पास तो सिर्फ 2 ही एलील्स होंगे. वन पर्सन हैज ओनली 2 क्रोमोसोम्स. सो यू कैन आइदर हैव कैपिटल ए, capital B, that person will become AB blood group, or that person can have A and O, A blood group, or that person can have O and O, O blood group. So whenever you see, you have A, you have B, you have O, but are they present at the same place? Are they all in different individuals? So alleles जो है, multiple allelism, ये basically populations में देखा जाता है. कहाँ देखा जाता है बताइए? In populations, in very large populations will you be able to see multiple allelism. Is that clear? Very large populations. But where will the alleles be present? Come on. Where will? At the same locus of the chromosome. ऐसा नहीं होगा. It cannot happen that you have A here, you have B here, and you have O here. Is that clear? You cannot have this. Okay? You have to have A,
If that person does not have A, you can have B. If that person does not have B, you can have O, but it will always be present on the same locus. What is the locus? The locus is the place on a chromosome where we have genes. So the place on the chromosome where we put genes, where we have genes, is the locus. Is that clear? Any doubts? I shall move ahead. Good. Are you enjoying the class? This is very very important. ये जो है देखो बेटा, मल्टीपल अलीलिज्म का मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल करवा दिया. आई के तीन फॉर्म्स A, B, राइट, कैपिटल लिख देते हैं, O. दिस इज मल्टीपल अलीलिज्म फॉर ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस. राइट, एक और अलील मैं आपको करवाती हूँ. राइट, इसमें मैं आपको दो तीन वर्ड्स करवाने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज पे अटेंशन. Now, beta, there can be a rabbit which is wild type. What is wild type? Wild type is the strongest oblique. This is very important. Can come in exams. So, wild type is the strongest and the most dominant allele. जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे डोमिनेंट अलील होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड टाइप. उसके लिए हम मान लीजिए सी का फॉर्म ले लेते हैं, कैपिटल सी कैपिटल सी. राइट, चिंचिला इज ब्लैक टिप्ड व्हाइट फर. राइट, टिप्स जो है वो यूजुअली ब्लैक कलर के होंगे. पॉज के ऊपर ब्लैक कवरिंग, नोज के पास ब्लैक कवरिंग, ईयर्स के एंड पे ब्लैक कवरिंग. सो ब्लैक टिप्ड व्हाइट फर इज कॉल्ड चिंचिला. सो द कैपिटल सी हैज टर्न्ड इनटू सी raised to power ch. Right, Himalayan is white fur with black paws, nose, ears and tail. चिंचिला यूजुअली मिक्स सा हो जाएगा, ग्रेइश सा कलर अपेयर हो जाएगा. राइट, यहाँ पे द व्हाइट एंड ब्लैक विल बी वेरी वेरी डिफरेंट. देखो सिर्फ यहाँ कोनों पे. राइट, दैट इज कॉल्ड द हिमालयन, जहां पे c raised to power ch हो गया, c raised to power h. एंड albino is white. This is recessive, small c small c. So capital C raised to power ch, c raised to power h and small c are all variations of the color gene of rabbits known as C. This is also known as multiple allelism. So भले ही जीन बॉडी में कैपिटल C हो, स्मॉल c हो, c raised to power ch हो या c raised to power h हो, वो चारों की चारों जीन्स कहाँ होंगी? Color of the fur के locus पे. They will not be at different positions of the chromosome. They will be present only at one location on the chromosome. What is that one location of the chromosome? It is the locus for color in fur. Right? So चलिए बच्चों, let's move ahead. चलो. Okay, a man with blood group A marries a woman with blood group B. What are all the possible blood groups of their offsprings? Interesting question. Come on, I want you to solve. Yes, come on, solve. And I am sure majority of you will say quickly this. Yes, majority. आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लेना है. ये है ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन हु इज ए एंड दिस इज ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन हु इज बी. मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस के लिए वी हैव टू टेक इट एज हेटेरोजाइगोट्स. तो फर्स्ट हो गया आई ए आई बी ए बी, सेकंड हो गया आई ए आई ओ ए ब्लड ग्रुप, थर्ड हो गया आई बी आई ओ B blood group and last हो गया IO that is O blood group. So ये चारों possibility हो सकती है when you have a person who's blood group A marrying another woman who's blood group B. Is that clear? So because the combination or the cross can occur between this, all four possibilities can exist. Is that clear? Yes. Right? So देखिए A blood group और ए में अगर शादी होती है, सी आई मेड द कंप्लीट चार्ट. राइट, चिल्ड्रंस ब्लड टाइप्स बी और ए चारों, ए बी और ए बी ए बी, ए और ओ ये, बी और ए. राइट, अगेन सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर. ए ब्लड ग्रुप के दो टाइप्स हो सकते हैं, या ये. आपने जनरली हेटेरोजाइगस लेना है so that you get all possible combinations. Until unless it is specified that it is a homozygous A into homozygous B. B blood group can be this because B is dominant over O like A. It can be like this. O blood group will have to be like this. AB blood group has to be like this only. Is that clear? Are you all smiling? Are you all understanding? Perfect. चलिए moving ahead. Any doubts in blood systems? You know this, right? So ये ABO blood group system है. Extra question, who has given the ABO blood group system? Karl Landsteiner. Yes,
किसने दिया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? कार्ल लैंडस्टाइनर। इसके अलावा एक रीसस ब्लड ग्रुप सिस्टम भी है। दिस इज व्हाई आई डिड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन। यस, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आएगा। चलिए, एबनॉर्मल ह्यूमन बेबी विद XXX क्रोमोसोम्स वर बोर्न ड्यू टू, चलो, यस, आई नो मेजॉरिटी ऑफ ये कहेंगे, बट ऐसा नहीं है। राइट मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर, बहुत सिंपल है। राइट इसका आंसर, सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए। यस यस यस, देखियो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, वो वर्ड लिखिए। चलिए, नॉन डिसजंक्शन, लिखो ये वर्ड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज द वर्ड? नॉन डिसजंक्शन। व्हाट इज द वर्ड? नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है सेपरेट ना होना। राइट, इट डज नॉट सेपरेट। क्या सेपरेट नहीं होता बेटा? सी, the eggs of the mother are produced when the mother was in her mother's womb. That means the eggs are produced at the time of birth, और उससे भी पहले, बर्थ से भी बिफोर बर्थ, जब मदर अपनी मदर के यूटरस में थी, तो तब से एग्स मैन्युफैक्चर हो गए होते हैं। So do the eggs after some age, do the eggs get old? Yes. और जब वो old होते हैं, so eggs के जो दोनों eggs हैं, eggs के जो दोनों eggs हैं, वो separate नहीं होते। They don't get separate. In fact, फीमेल कितने दे देती है? दोनों एक्स एक साथ, और फादर क्या दे देता है? एक और एक्स। इज दैट क्लियर? तो क्या बन जाता है? दिस। इज दैट क्लियर? Right, the two x's always come from the mother, because sometimes when the eggs become old, the mother's two x's do not separate. They do not separate. Is that clear? Moving ahead to the next slide. Any doubts still here? Please put your doubts down on the comment section. Any doubts? I shall move ahead. Chaliye quickly. Right? So the abnormal baby has an extra X chromosome. It must have been produced by fusion of abnormal XX ovum with a normal X sperm. So it is the ovum which is abnormal or XX. Right? So ये जब XX ovum होता है, देखो ये था, तो यहाँ पे एक X इधर जाना चाहिए, एक X इधर जाना चाहिए, सिंपल। अब क्या हुआ है? ये दोनों एक तरफ चले गए हैं, सो दूसरी तरफ हो गया ओ, मतलब इट इज एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी मेल के एक्स के साथ जुड़ गया, तो ये क्या बना देगा? एग्जैक्टली अभी हमने किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंड्रोम? कम ऑन एवरीबॉडी, एग्जैक्टली। और अगर ये एक्स जुड़ गया, इट विल बी एक्स एक्स एक्स, otherwise this will form Turner's syndrome. Done? Any doubts? So it's usually coming from the abnormal ovum. Okay, moving ahead. A gene which shows codominance. What is codominance? दोनों के दोनों genes. See, suppose there is A and there is B. Suppose, right? Quickly. So let's suppose there is A and suppose there is B. Now, A जो है वो B को सप्रेस नहीं कर सकता, और B जो है वो A को सप्रेस नहीं कर सकता। So A and B आपस में क्या होते हैं? Co-dominant. Is that clear? They both show the characteristics. That means body में दोनों characters दिखाई देंगे। A antigen भी होगा blood में और B antigen भी होगा। This is called as codominance. That means both the alleles, ये I की दो alleles हैं, एक I का allele का नाम था IA और दूसरी allele का नाम था IB। तो दोनों ही alleles IA और IB, दोनों ही alleles क्या हो रही हैं? एग्जिबिट हो रही है। सो जब दोनों अलील्स एग्जिबिट हो जाएं, इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। क्या आंसर होगा? व्हाट विल बी द आंसर आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस? एब्सोल्युटली both alleles are independently expressed in the heterozygote. So when both the alleles are expressed in the heterozygote, we call it codominance. It is the classical example of the ABO blood group system. Is that clear? Right now, yes. Is that clear? It's a classical example of codominance. Have you also seen a roan coat color? The roan coat color, yes, in cattle, half brown, half white, half brown, half white, half black, half white in cattle. This also is a classical example of the roan
coat coloration. Understood? Right? Chaliye, moving ahead. Next question. In his classical experiments on the pea plant पे किसने काम किया था? Gregor Johann Mendel ने काम किया था. Mendel ने 7 characters use किए थे. There were 7 pairs of contrasting characters that Mendel had used when he was studying the Pisum sativum or the pea plant. What were the 7 characters? इनमें इन चारों में से कौन सा वो character नहीं था? चलिए, simple. इन चारों में से कौन सा वो कैरेक्टर नहीं था? Yes, have you answered? Perfect, perfect, very well answered. Yes, पॉड की लेंथ नहीं थी. पॉड की लेंथ नहीं थी. लेट मी शो यू. यस, देखिए, पॉड की शेप थी, पॉड का कलर था, पॉड की शेप थी कि वो कंस्ट्रिक्टेड है या वो ऐसा है, रिंकल्ड है या कंस्ट्रिक्टेड है या इन्फ्लेटेड है. उसका कलर था, उसकी शेप थी, बट पॉड की लेंथ नहीं थी. सो व्हाट वर द कैरेक्टर्स? आई हैव रिटन ऑल द कैरेक्टर्स फॉर यू जस्ट इन केस you ever get confused. Plant height, whether it was tall or dwarf. Flower position, whether it was axial and terminal. The pod color, whether it is green or yellow. The pod का shape, whether it is inflated, फूला हुआ है या constricted है. Flower color, which is either violet or white. Seed की shape, seed smooth है या seed wrinkled है. And seed color. So there is pod shape and pod color, there is seed shape and seed color, but there is no mention of the pod length. Please remember the 7 pairs of contrasting characters, and also remember, please, yes, remember the 7 pairs of contrasting characters, and also remember which is dominant and which is recessive. It is a favorite MCQ question. yes, तो बच्चों देखते ही देखते हमारी 30 स्लाइड्स हो गई हैं 26 मिनट में. Yes, every class I'm going to do questions, answers with explanations. Every class we're going to do close to 80 slides. So it's just been half an hour and we've already done around 30 odd slides. Chaliye, let's move ahead. A colorblind man marries a woman with normal sight who has no history of color blindness. So it's a colorblind man marries a normal woman, right? ये देखिए, with normal sight who has no history of color blindness. This question came in the year 1999 and 2003, and both the years everybody got the marks because there's something wrong in the question. Actually, you cannot possibly tell the complete answer. So that is why they are also asking what is the probability of their grandson being colorblind. Now they have not mentioned whether it is from the paternal side or whether it is from the maternal side, right? It is their son's son or their daughter's son, correct? Is that clear? They have not mentioned anything. It could, one, we are sure इनका बच्चा होगा. Second, किससे शादी हो रही है? They have also not mentioned that, right? But yes, इनमें से कोई ना कोई एक तो कैरियर हो सकता है because the color blind man है, तो हो सकता है जो इसकी डॉटर हो, वो कैरियर हो. Right, everybody? So therefore, there is a chance, but what is the chance? The chance will be very less because we don't know what is the other person. Is it normal or is it a carrier? So very less chance. Therefore, I'm going to stick the answer to 0.25. So this was the colorblind man. As you already know, this is the normal woman. Their grandson has been asked, although they've not mentioned about the paternal or the maternal grandson. They have not mentioned कि किससे शादी हो रही है. So we do not really know the details. The nil नहीं होगा because this is a carrier. So this male is a sufferer here. But इस हो सकता है daughter कोई हो, वो carrier हो, तो gene आगे जाएगी because gene एक बार आ गई है, right? So nil नहीं होगा, but it's going to be very less. Therefore, the answer will be 0.25%. Right? This is just another graph. अगर एक carrier woman marries a colorblind man, तो क्या होगा? Carrier daughter, normal son, colorblind daughter, colorblind son. This is a Punnett square of a carrier woman marrying a colorblind man. What I want to show you by these Punnett squares is how the crosses are done. Is it clear? Everybody, should I move ahead? Any doubts? Any doubts? Done? Chaliye. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज अ प्लियोट्रोपिक जीन? दो वर्ड्स पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है. एक वर्ड होता है प्लियोट्रोपी और दूसरा वर्ड क्या होता है? यस, यस, कम ऑन, यू टेल मी ऑन माय स्क्रीन.
राइट? एक वर्ड होता है मल्टीपल अलीलिज्म, एक वर्ड होता है प्लियोट्रोपी, दूसरा वर्ड यस, राइट? देखो मैं आपको बताती हूँ अभी, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन दीज टू वर्ड्स, देन आई विल कम टू दैट वर्ड आल्सो। ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, प्लियोट्रोपी में क्या होता है, वन जीन, एक ही जीन है, एक जीन चेंज होती है, एक जीन मॉडिफाई होती है, एक जीन में म्यूटेशन होती है, सिर्फ एक जीन, राइट? और इसके इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट्स। One gene having multiple effects is pleiotropy, right? What is multiple allelism? एक कैरेक्टर के लिए, एक चीज के लिए मेरे पास many genes हैं, so many genes are regulating one character. This is multiple alleles. I have many alleles, more than genes, let us call that many alleles. मेरे पास एक कैरेक्टर के लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए बहुत सारी alleles हैं. Now I want to tell you something else also. मेरे पास एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर, राइट? यस, दिस इज द वर्ड दैट आई वाज लुकिंग फॉर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पी, it is called as polygenic inheritance. This is what I was looking for, polygenic inheritance. That is why I did not use the word कि कोई तो मुझे मैसेज करके टाइप करके बताए। मेरे पास स्किन कलर है, स्किन कलर इज वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है स्किन कलर, राइट? इस स्किन कलर कैरेक्टर के लिए, इस चीज के लिए मेरे पास तीन पेयर्स ऑफ जीन्स हैं, capital A, capital B, small, capital C, small a, small b, small c. So I have these genes for skin color. I have three pairs of genes for a single character like skin color. This is called polygenic inheritance. एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास जब बहुत सारी जीन्स हो, आई कॉल इट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक जीन अगर मल्टीपल इफेक्ट्स दिखा दे, आई कॉल इट प्लियोट्रोपिक जीन। आई विल टेल यू दिस इन डिटेल। सिकल सेल अनीमिया में म्यूटेशन की वजह से एक अमाइनो एसिड बदल जाता है, प्लीज लिसन टू बी केयरफुली। सिकल सेल अनीमिया में म्यूटेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन सिकल सेल अनीमिया, वन अमाइनो एसिड चेंजेस, द ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड is replaced by valine. Because of a change in one amino acid, the shape of the RBC changes. Because the change of the shape of the RBC occurs, they are killed by the body because they are not a good shape, because of which the number of RBCs decrease, because of which anemia occurs, because of which the oxygen carrying capacity of the body is less. This abnormal RBC can go and deposit in organs of the body, causing damage to the organs. So there is only one gene, and that is causing multiple effects. That is known as pleiotropy. So one gene showing multiple effects is known as pleiotropy. Perfect. Chaliye. A pleiotropic gene controls multiple traits in an individual. So it is one gene controlling many effects, or having many effects, or controlling many traits, many things, is known as pleiotropy. Moving ahead to the next question. Before this, let me quickly do the explanation, right? So in a pleiotropic gene, there's a single gene, the single gene beta globin chain. आपको पता है अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। So बीटा चेन में म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से glutamic acid is replaced by valine. Because of a single mutation, because of a point mutation, that means mutation occurring in a single base, glutamic acid changes to valine. Because of glutamic acid changing to valine, spiridin नाम का प्रोटीन नहीं बनता है। Spiridin used to give us biconcave shape in the RBC. ये नहीं बनेगा। RBC will be of this shape, which is called as sickle shape. They can go and block the arteries of the retina, causing blindness. They can block the hepatic arteries, hepatic sinusoids, liver failure. They can even block the arteries of the heart. So one gene having multiple effects is known as pleiotropy. Is that clear? This is a very, very simple chart. Look at this chart. It's a simple pedigree analysis. The symbols of pedigree analysis I have discussed in detail. You tell me out of A, B, C, D options, what should be the correct answer for this particular question? Yes, quickly. Quickly. Correct, everybody. Absolutely right. Yes, it is autosomal recessive. देखो बेटा, अगर autosomal dominant होता, राइट? अगर ऑटोसोमल का, देखो सेक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक में क्या होता है, ऊपर की जनरेशन में इट इज क्रिस क्रॉस। दैट मीन्स ऊपर की जनरेशन में मदर, मदर से नीचे की जनरेशन में उसके सन्स होंगे, मेल्स होंगे, अगली जनरेशन में फिर फीमेल्स होंगी, फिर अगली जनरेशन में मेल्स होंगे। तो एक जनरेशन की मेल फीमेल क्रिस क्रॉस करेगा, बिकॉज इट गोज फ्रॉम मदर टू सन, फ्रॉम सन टू डॉटर, फ्रॉम डॉटर टू सन,
correct? So that crisscross is not happening, it is not X-linked, right? X-linked recessive हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस नहीं है. ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये सारों को अफेक्ट करता है, right? So you will not have like half of them unaffected. Autosomal dominant, everybody will be affected because number one, ये X-linked नहीं है, तो ये across सब gene, सब chromosomes में it is autosomal, right? So it is affecting some of them. That means ये autosomal dominant नहीं है, ये क्या है? Autosomal recessive. This is the chart for pedigree analysis. Females are made like this, males are made like this, affected with trait. It could even be the female or male. आप अंदर उसमें color भर देंगे. Disease, twins are like this, adopted, yes, this. Okay, line of descent, this is man. अगर हम दो लाइनें डालेंगे वहां पे, this will mean co-sanguineous marriages. We have two lines there, there will be co-sanguineous marriages. That means it's a marriage between closely related individuals. Okay, so it's a marriage between closely related individuals. With that, we come to halfway of the class, another 40 slides, and we will be done with principles of inheritance in detail. Can you imagine in one class we are doing close to 80 odd slides? Yes, this is a very, very simple question. Come on, quickly. This is very, very simple. Sutton and Bovary ने दिया था chromosomal basis of inheritance. Mendel is the father of genetics. तो linkage के लिए कौन बच गया? Linkage which is inversely proportional to recombination. Yes, or crossing. Linkage which is inversely proportional to crossing over. Linkage crossing over से inversely proportional होता है. Linkage किसने दिया था? T.H. Morgan ने दिया था. Right? He said genes can be linked. Linkage concept Mendel को मिला ही नहीं था. He saw that genes could be linked. He was working on Drosophila melanogaster. Sutton and Bovary ने मिलकर दी थी chromosomal theory of inheritance. कौन सी theory दी थी? Chromosomal theory of inheritance. Clear? Is this clear, everybody? चलिए, let's move ahead. Let's move ahead. Let's move ahead. चलो. So linkage is the phenomenon where certain genes staying together during inheritance. So linkage, there is no crossing over, right? Linkage was first suggested by Sutton and Bovary when they pronounced the most favorite and most famous important chromosomal theory of inheritance. They saw कि कुछ तो है chromosomes पे, कुछ तो attached है, but they could not do it in detail. Is that clear? So it was a Morgan who in the year 1910 clearly proved, defined linkage based on the basis of his breeding experiments on the fruit fly known as a wonder organism known as Drosophila melanogaster. So this can come as an MCQ question. This can come as an MCQ question, and there is one more MCQ question in the explanation. Bateson and Punnett in the year 1906. Punnett, yeah, the one who's famous for the Punnett squares, absolutely. While working on sweet pea का botanical name, one more MCQ question is Lathyrus odoratus. Lathyrus odoratus is sweet pea, right? Found the factors for certain genes do not show independent assortment. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो शक की गोली डाल दी कि कई चीजें independently assort नहीं हो रही हैं. So अगर कभी आपसे पूछा कि who were the first people to show that Lathyrus odoratus certain genes do not independently assort, the question will be absolutely right. Bateson and Punnett will be the question. Done? Okay, let's move ahead. Let's move ahead. A cell at telophase stage. Prophase में nuclear membrane nuclear membrane dissolve हो रही है. Metaphase पे वो equator पे लग रहे हैं. Anaphase में वो separate हो रहे हैं. और cell division के telophase stage पे they are coming together. Cell and cell division का there are detailed slides available. Theory slides. Yes, and I am making a bonus lecture on cell division. Just give us some time. The theory slides are available on Vedantu NEET channel. Please see. Cell ki detailed slides are available. It is very, very important. The detailed slides are available. Is that clear? Is that clear? Come. So cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that the cell is not like other cells at telophase stage. There is no, देखो telophase में क्या हो रहा है? Cells are separating, right? So जब cells separate हो रहे हैं, there is cell plate formation. Cell plate formation किसमें होती है? Plants में. मतलब बीच से division हो रहा है. Look at it. बीच से क्या हो रहा है? Division, right? आधा ऊपर, आधा नीचे. There is division. Right, that is the cell plate formation. So वो बच्चा देख के कहता है that ma'am the cell plate is not forming, the cell is not dividing. तो if the cell is not dividing क्या होगा?
सोमाक्लोनल वेरिएशन, पॉलीटनी, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, बताइए। यस, दैट मीन्स इफ द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, न्यूक्लियर डिवाइड हो गया, इसके अंदर 2 हो जाएंगे, फिर से डिवाइड करने की कोशिश करेगा, अगर सेल नहीं डिवाइड करेगा 4 हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, राइट? N poly means, so the number of, yes, the amount of DNA of the chromosomes will increase. That means there is nuclear division happening. न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है पर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है। सो न्यूक्लियर डिवीजन होना और सेल डिवीजन नहीं होना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। इज दैट क्लियर? राइट? ये क्यों हो सकता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्लीज पे अटेंशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्यों हो सकता है? कई बार कुछ पौधों को ये अप्लाई कर दिया जाता है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन इज अ माइटोटिक पॉइजन। क्या है ये? इट इज अ माइटोटिक पॉइजन। ये कॉल्चिसिन स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ द स्पिंडल फाइबर्स टू फॉर्म. It's a mitotic poison. It does not allow the spindle fibers to form. So when the spindle fibers do not form, if the spindle fibers are not formed, when the spindle fibers are not formed, is that clear, everybody? The cell, the nucleus will divide. Nucleus will, but this will not happen. So the cell will not divide. It will also lead to polyploidy. It's a very, very, very important MCQ question. So colchicine is a mitotic poison which causes polyploidy. Polyploidy remains inside the cell. That means the number of chromosomes which are increasing remain inside the cell. Therefore, this could also be known as endo, means inside, polyploidy. It could also be called as endopolyploidy. Chaliye, moving ahead to the next question. Right? So polyploidy, you see the number of chromosomes have increased. ऑटोपॉलीप्लॉइड अगर खुद की वजह से ही वो इंक्रीज हो रहे हैं. एलोपॉलीप्लॉइड लाइक वीट, अगर 2 या 3 कहीं से मिल गया, 2 या 3 कहीं और से मिल गया, तो वो बढ़ गया. राइट? फ्यूजन ऑफ 2 अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हो गया, 2 और ऑर्गेनिजम्स का फ्यूजन हो गया, दैट इज एलोपॉलीप्लॉइड. सेल्फ इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ऑटोपॉलीप्लॉइड. प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंक्रीज इन नंबर, पॉलीप्लॉइडी हैपेंस बिकॉज ऑफ कॉल्चिसिन. खुद का नंबर इंक्रीज होना, ऑटोपॉलीप्लॉइड. दूसरे कहीं से नंबर लाकर इंक्रीज कर लेना, एलोपॉलीप्लॉइड. चलिए, pick out the correct statements. Right? चलिए, pick out the correct statements. Come on, everybody. Come on. Hemophilia is a sex-linked recessive disease. 2n minus 1, 2n plus 1. Yes. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. Sickle cell anemia is X-linked recessive gene disorder. X-linked recessive, बताइए. Yes, exactly. So sickle cell anemia is not, right? 1, 2 and 3 are correct. It's not X-linked. Is that clear? Hemophilia sex-linked recessive disorder, X-linked, yes. Down syndrome is, yes, trisomy 21. The 21st chromosome has got trisomy 21. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder, right? Exactly. Sickle cell anemia is autosomal recessive. यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ? X-linked. No, it is autosomal recessive. It's present on the autosomes, not on the X chromosome or the sex chromosomes, right? It can be transmitted from parents to the offspring when both the parents are carriers. देखो बेटा, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, और एक एडल्ट हीमोग्लोबिन HbS है, इसको नॉर्मल एडल्ट कहते हैं, तो इसको सिर्फ एक HbS है, दिस पर्सन इज कॉल्ड अ कैरियर. राइट? दिस इज कॉल्ड अ सिकल सेल ट्रेट, मतलब सिकल सेल है. अगर दोनों है, then only the person is called as, exactly. Done? Chaliye. So now in this diagram again, 1 second, you can even see the shape. See? You can even see the shape. Sickling. See? Okay. Chaliye. Moving ahead now. A tall, true breeding garden plant, pea plant, the one which Mendel studied, is crossed with a dwarf breeding garden pea plant. When the F1 plants were self, the resulting genotypes were in the ratio of, so tall, true breeding into dwarf, you will have capital T, small t, you just have to self them. So you will have capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, and small t, small t. Simple. So the ratio has to be
1:2:1. Yes, I'll do it again. Tall, tall. You all know this. Dwarf. F1 progeny ये निकली. You have to self it. So you will have this, and this in the ratio of 1:1. Done. एंड द रेशियो ऑफ सीइंग इज 3:1. तीन टॉल दिखेंगे, भले ही वो टॉल ऐसे हो या वो टॉल ऐसे हो, बट तीन क्या दिखेंगे? टॉल. अंडरस्टूड? चलिए, मूविंग अहेड. यस, सो दिस इज अ टॉल ब्रीडिंग 2p प्लांट. राइट, पाइसम सेटाइवम. टर्मिनल फ्लावर है, यहाँ पे व्हाइट कलर का है. किसने स्टडी किया था? ये ग्रेगर जोहान मेंडल ने स्टडी किया था. मैच करिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मैंने आपको करा दिया है, प्लियोट्रोपी करवा दिया है, डोमिनेंस आपको पता है, एबीओ ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस आपको पता है. आज की क्लास में वी हैव ऑल डन एबीसीडी. Right, the theory of ABCD we've already done. Dominance is capital T, small t. One is dominant, the other is recessive. Codominance is IAIB, Roan coat color. Pleiotropy is one gene, many effects. Polygenic inheritance is many genes showing a single effect. Absolutely. Chaliye. Right? Bilkul. So dominance is in a heterozygous organism, only one allele expresses itself. Codominance is in a heterozygous condition, AB. Both the genes express themselves. Right? Pleiotropy is single gene influences many characters. Polygenic inheritance, many genes govern a single character. For example, skin color. Right? Is that clear? Chaliye, moving ahead. Right? So ये रहा. Right? One gene is getting affected इनमें, कहीं भी हो सकती है वो. This is a normal dominant relationship. Test cross. Test cross क्या होता है? Whenever we have a, this is the theory which I am doing, बच्चों please pay attention. Right? So whenever we have a unknown genotype, मुझे नहीं पता, वो tall दिख रहा है. It's a phenotype. Right? Tall दिख रहा है. पर वो tall, ये देखो, tall दिख रहा है. पर ये जो tall है, ये जो टॉल है, लेट्स यूज अ रेड पेन. राइट, ये टॉल जो है, ये टॉल दिख रहा है. लेट मी यूज and write it here. I can see that it is tall, right? I can see that it is tall, but it can be capital T or it can be capital T small t. मुझे कैसे पता चलेगा कि प्योर है? That means मुझे कैसे पता चलेगा कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? कैसे पता चलेगा? मैं दोनों को किससे क्रॉस करवा दूं? रिसेसिव से. तो अगर मैं ये क्रॉस कराऊंगी, करिए क्रॉस फटाफट, सारे टॉल आ जाएंगे. पर अगर मैं ये क्रॉस कराऊंगी तो आधे क्या आ जाएंगे? डॉर्फ. तो अगर कोई डॉर्फ आ गए, जब भी मैंने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, व्हेनेवर आई हैव डन अ क्रॉस with a recessive parent, if there are dwarf offsprings, that means it was heterozygous. If there are all tall offsprings, that means it was homozygous. So a test cross is done to find out the genotype of an unknown organism. Is it capital T or is it capital T small t? I don't know the genotype. So whenever I have to find out the genotype of an unknown organism, I do a test cross. Right? So what is a test cross? A test cross is done. The two genes are linked and present on the same chromosome. Right? In a test cross involving F1 hybrid flies, more parental type offsprings were produced than the recombinant ones. Now this is about recombination. That means मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है. Now what do you understand by more parental types? Right? More parental types का मतलब होता है non recombinance. That means ये genes crossing over नहीं किया. Right? They have, why have they not crossed over? This is the question. Why? देखिए दो genes ऐसे हैं, मान लीजिए, you can see two blue dots. That means these genes are very close. If the genes are close, they are linked. If they are linked, they will not do crossing over. Is that clear? अगर लिंकेज नहीं है, if there is no linkage. अब दूसरा केस ले लीजिए, ये देखिए दूसरा केस, you can take this. एक gene is here, one gene is here, one gene is here. So the distance is too much. Therefore, linkage is very weak. Therefore, crossing over will happen. So whenever you have crossing over, you have recombinants which are formed. Whenever there is non-crossing over, you have the parental types which are produced, right? So अगर एक gene इधर है और एक gene इधर है, the distance is too much,
right? Because the distance is too much, the physical distance between the genes is too much, because of which crossing over will happen, recombinants will be produced. If the distance is very little, these ये दो genes है मान लीजिए same, so distance is very less, so crossing over will not happen. Done. Moving ahead, which one of the following most appropriately describes a disease called hemophilia? Hemophilia, we have done it so many times. ये तो फट करके आंसर आना चाहिए. Absolutely. हीमोफीलिया और अ ब्लीडर्स डिसऑर्डर, जिसको हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं, ये फैक्टर्स की कमी की वजह से होती है. प्लीज पे अटेंशन ऑन द थ्योरी. देयर इज फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी. देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स. फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोफीलिया ए. फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोफीलिया बी. इज दैट क्लियर? हीमोफीलिया is because of X-linked recessive gene disorder, right? It is X-linked, that means it's on the X chromosome, it is a recessive gene disorder, correct? Moving ahead. Yes, we've come to the last 8-9 minutes of the class. Quickly, hemophilia mein there is inability to clot. There are 13 factors which cause clotting. Factor 8 and factor 9 are missing. This was also found in the royal family of British, because they used to intermarry. So इस family में बहुत ज़्यादा फैल गई थी, right? That is hemophilia or bleeder's disease. The mechanism that causes a gene to move, देखो लिंकेज में वो मूव नहीं करेंगी. क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो जीन्स हैं, ये एक यहाँ है एक यहाँ है, बिल्कुल पास पास हैं, पर फिर भी वो जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं. सो द मैकेनिज्म दैट कॉजेज अ जीन टू मूव, ये जीन यहाँ कैसे कहीं और कैसे चली जाएगी, टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू द अदर. व्हाट इज द मैकेनिज्म? कम ऑन. Yes, exactly. Well answered. The mechanism is translocation. Crossing over होगा, but crossing over में मान लीजिए एक जीन इधर है और दूसरी जीन इधर है. इनके बीच में अगर लिंकेज वीक होगी, इनके बीच में अगर लिंकेज वीक होगी, if they only then will they break. Right? So what is the reason जिसमें linked genes चली जाएंगी? See this part. So they have exchanged. ये वाला part यहाँ लग गया और ये वाला part यहाँ लग गया. There are chromosomes called chromosome 9 and chromosome 22. There are chromosomes called chromosome number 14 and chromosome number 21. They undergo exchange of segments. Is it a normal thing? Tell me, क्या क्रोमोसोम 14 और 21 आपस में से आर दे होमोलोगस? आर दे सेम क्रोमोसोम्स? आर दे कैरिंग सिमिलर इंफॉर्मेशन? नो. आर दे होमोलोगस? नो. इज इट अ नॉर्मल थिंग? नो. इट्स अ एग्जैक्टली जिसमें लिंकेज ग्रुप्स टूट जाते हैं. दिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, where non-homologous chromosomes, unrelated chromosomes, they exchange their segment. Is that clear? तो इसमें जो जीन्स, मान लीजिए ये एक ग्रुप था, यहाँ पे एक जीन थी और यहाँ पे दो जीन थी, दिख रही है, एंड दे वर लिंक्ड. कैन यू सी द 2 ब्लैक मार्क्स? एंड दे वर लिंक्ड. बट अब क्या हो गया? लुक एट द रेड पेन, ये हो गया, मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया. सो द लिंकेज ग्रुप हैज बीन ब्रोकन. वरना आप सोचिए यहाँ पे एक जीन थी ब्लू कलर और यहाँ पे दूसरी. So again मैंने इनको बीच से क्या कर दिया? ब्रेक. So the linkage group has been broken. Exactly. Exactly. Right? Moving ahead. If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is, it's a colorblind man, right? X prime Y, colorblind man marries a woman who's homozygous for, yes, will the man, so color blindness is known as X-linked recessive, right? इसमें तो सॉल्विंग करने की जरूरत ही नहीं है. X-linked recessive है और ये क्या फॉलो करता है? क्रिस क्रॉस पैटर्न. दैट मीन्स सन को जीन कहां से मिलेगी? मदर. और सन सन को देगा स्ट्रेट? नहीं. सन किसको देगा? डॉटर. ये डॉटर जब मदर बनेगी, ये किसको देगी? अपने सन को. सो मैन इज कलर ब्लाइंड, बट सन को जीन, मैन क्या देगा इस सन को? वाई. एक्स नहीं देगा. और कलर ब्लाइंडनेस की जीन एक्स में होती है, पर मदर को तो क्या बना दिया आपने? नॉर्मल है मदर, तो इसका एक्स नॉर्मल होगा. सो सन का चांस क्या होगा? वाई. बट ये कलर ब्लाइंड मैन एक्स किसको देगा? एक्स किसको देगा? डॉटर को. तो सन से कहा जाएगी? इट विल गो टू द डॉटर. इट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. Right? Another very nice simple Punnett square that I've shared on color blindness. Right? You can all go back home and see this.
This is a very important question, previous year AIMS question, previous year NEET question, very important question. Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to a problem in the globin molecules. आपको पता है दो अल्फा और दो ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं. यस, ग्लोबिन चेन होती है किसमें? हीमोग्लोबिन में होती है, राइट, एडल्ट हीमोग्लोबिन. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए. चलिए, टेक अ सेकंड प्लीज, कम ऑन एवरीबॉडी, टेक अ सेकंड. थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ ग्लोबिन प्रॉब्लम. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? चलो, come on, absolutely right, both of them are due to, yes, quantitative nahi, sickle cell anemia mein kaun, yes, thalassemia is due to less synthesis of globin molecules. So thalassemia, which is also known as Mediterranean anemia, MCQ, extra information, write it down, also known as Cooley's anemia, right everybody, it's because of less synthesis of globin molecules. सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, मैं आपको बता चुकी हूँ. ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन at the 6th position of beta globin. Please click a snapshot of this slide. Very important, right? Thalassemia, which is known as Cooley's anemia or Mediterranean anemia, is due to mutation or deletion, जिसकी वजह से reduced rate of synthesis हो जाता है globin. So globin कम हो जाता है. Hence, it is quantitative defect in functioning of the globin molecules. Globin कम हो जाएगा जिसकी वजह से oxygen carrying capacity क्या हो जाएगी? कम. आपको सिर्फ ईयर्स बताने हैं, कौन से ईयर में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था. ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आए हुए हैं. कम ऑन, टेल मी द ईयर्स एवरीबॉडी. एग्जैक्टली 1856 to 1863 were the years that Mendel had did his experiments. Is that clear? Yes, cool everybody, understanding. Moving to the last 3, 4, 5 slides in the next 2 minutes. Recessive genes कब express होती हैं? देखिए, यहाँ पे recessive gene express होगी, यहाँ पे recessive gene express होगी. Recessive gene कब express होगी? ऐसे. Recessive gene कब express होगी? ऐसे. कब express होगी? ऐसे. तो कैसे, कब, कौन सी स्टेट में? ये है हेटेरोजाइगस. क्या आपको रिसेसिव जीन नजर आएगी? एक्सप्रेस होगी? बिल्कुल नहीं. क्या यहाँ रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगी? एब्सोल्युटली. सो रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस होंगी? इन होमोजाइगस कंडीशन. अगर आपने इनके साथ एक डोमिनेंट बना दिया, हेटेरोजाइगस कर दिया, रिसेसिव जीन दब जाएंगी, एक्सप्रेस नहीं होंगी. दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? सो हेटेरोजाइगस में रिसेसिव जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होंगी. सी, होमोजाइगस कब एक्सप्रेस हो रही है? homozygous, right? Moving ahead, phenotypic ratio of monohybrid crosses. What is phenotype? The one that I can see. What is genotype? The one whose genes are there, right? So देखिए, मैंने ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो हम इसको शुरू से कर देते हैं फटाफट, 1 सेकंड लगा के. We will do it. Monohybrid cross, that means we are talking only one character. Let the character be height. So tall into dwarf, I will get this, right? Let me self this. So I will get capital T, capital T, capital T, small t, capital T, small t, small t, small t, right? So 3 are tall and 1 is dwarf. So the ratio will be 3:1. Is it not? Yes, right? अब इन्होंने पूछा टेस्ट क्रॉस. वेरी गुड, इस पे आइए. 3:1 तो आपकी नॉर्मल रेशियो है. दैट मीन्स आपने ये लिया, ये आपका F1 आ गया, और इसको आपने टेस्ट में किससे कर दिया? So C 2:2, which is equal to 1:1. So 3:1 रेशियो आपकी किसकी है? नॉर्मल फिनोटाइपिक क्रॉस की. इज दैट क्लियर? एंड इसमें आपने क्या करना है? F1 को टेस्ट क्रॉस डबल रिसेसिव के साथ. इज दैट क्लियर? एंड देयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? 2:2, जो क्या बन जाएगा आपका? 1:1. यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूं. इसकी रेशो 1:1, इसकी रेशो करिए, करने की जरूरत नहीं है. 1:1:1:1. मैं अपनी क्लास में हमेशा बताती हूँ, इसकी रेशो 1:1. दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक.
ट्रिक से मुझे याद आया, बच्चों वी आर कमिंग अप विद ऑसम न्यूमोनिक्स पे मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया है, न्यूमोनिक्स एंड ट्रिक्स पे बहुत अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, राइट? लुक एट दिस, राइट? तो ये हमारा ये निकला, अगर इसको ही हम करेंगे सेल्फिंग तो आपको पता है हमारी रेशो 3:1 निकलेगी। अगर इसको मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगी तो रेशो क्या निकलेगी? 2:2, जो ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाएगी? 1:1। Yes, my dear kids. So that brings us to the end of Principles of Inheritance and Variation Part 2. I hope you had a fabulous time. In 1 hour, we were able to do 80 slides along with explanations and questions. And I feel that is super cool. This is the standard of Vedantu students. Super high, super amazing. I hope you're all charged. I hope you're in full josh. And now is just the beginning of the day. So my dear students, चलिए जाइए अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़िए, study hard, study well, make sure that you make the entire country proud, make sure that you make your parents proud, make sure that you make us proud. Yes, go study very hard. If there's anything that you want us to do, please let us know. Till then, I sign off on behalf of Vedantu. This is Dr. Vani signing off. See you soon tomorrow. Bye, guys. Bye. Yes, thank you and bye bye.